Hello everyone, welcome to another fantasy match preview. But obviously, the happiness and the smile on our faces is not only got to do with that preview, but with another event happening in the fourth test match. So now that we have the test match pro sitting with us, Nikhil bhai, tell us your thoughts on what you feel exactly about that knock and how it transpired. Did the pitch help, or was it just classy batting? I think the first and the biggest emotion is relief that some normalcy somewhere, because again just tells you that जो भी मिलता है उसको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. जब विराट इतने सारे सेंचुरीज मार रहे थे Okay, I think his stream has got stuck, but yes, we'll wait for him to tune back in. Till then, we'll also discuss and look at. Sorry, sir. Yeah, I think your this thing नहीं. got stuck. हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे कोहली की सेंचुरी का ड्रॉट था, आपको हमेशा फैंटेसी में भी सब दिन सही जाए ज़रूरी नहीं होता, बट कोहली के 30-40 भी इम्पोर्टेंट थे. तो आपके लिए वो छोटे-छोटे रिटर्न्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसके लिए सही प्लेटफ़ॉर्म पे खेलें और बैक करें अपने प्रोसेस को, क्योंकि वही आपको आगे लेके जाएगा. और डब्ल्यूपीएल में अब तक हमने देखा है आपको एक कॉम्बिनेशन चाहिए. दिस इज़ एक्चुअली वेरी रिस्की टू गो, बट अगर आपकी कल मैरिजन कैप कैप्टन नहीं थी तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं आया होगा. तो आई थिंक वो रियलिटी Hmm. को एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा एंड देन विल हैव टू वर्क अराउंड इट, एंड व्हिच इज व्हाई मल्टीपल कॉम्बिनेशंस एंड मोर मल्टीविनर्स. Yes, absolutely. That's the key. And we are doing this preview on the Fan to Play app where we all have had two fantabulous days in the last 2 days. So, yesterday we got about 3x of our investment. And the best part is, I love that graphic on top, which tells you exactly how good or bad the game was. So, that was या yesterday's game. And the day before that, where we just missed the GL game on the fourth rank. So stay tuned. The app link is in the description. You're able to save a lot of commission on contests, and obviously there are a lot of leaderboards running exclusively for you. So now let's look at the team that we are going to make for today's game. That is UP versus Mumbai. And we'll take all your questions in some time. आपके सारे questions थोड़े समय में लेंगे. And flow of the conversation will be कि जो भी हम बातें करेंगे, I'll try to move towards the English side and Nikhil bhai towards the Hindi side, so all viewers are satisfied. And ensure you hit the like button, if not for us, then for Virat, so that the good luck continues. And now let's look at the team for this specific game. So Nikhil bhai, what do you think? Brabon again, flat out good batting track. हाँ, पर हमने देखा है कि विकेट्स गिरी हैं स्पिनर्स को एज कंपेयर टू पेस कभी-कभी ज़्यादा. तो अगेन पिच रिपोर्ट क्रिटिकल होगी. सेकंड इनिंग्स में ड्यू आती है, पर एंड चेसिंग हैज़ बिकम लाइक अ केक वॉक. तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसा किस तरीके का डेक है, कितना ड्यू एक्सपेक्टेड है. यूजुअली टीम्स बॉलिंग फर्स्ट हैव डन टू गुड अप टॉप और फिर बाद में चेज़ हो जाता है, तो वो चीज़ें याद में रख के चलें. अब कुछ ये 2 टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आई होप ऐसा ना हो कि एक ही कॉम्बिनेशन चले. और इस गेम में इतने सारे मैचअप्स हैं आपके पास टू डिस्कस कि यू कैन स्टिल टेक रिस्क एंड प्ले मल्टीपल कॉम्बिनेशंस. जैसा भी आप Hmm. अगर आप विकेट कीपिंग सेक्शन में आएँगे, यस्तिका भाटिया, एलिसा हिली. यस्तिका भाटिया भी शायद हिली को ही पिक करे अपनी टीम में. पर द चैलेंज हियर इज़ हिली के साथ सामने जो मैचअप है वो काफ़ी अच्छे हैं. लाइक स्कीवर ने उनको 27 बॉल में 3 बार आउट करा है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिली मैथ्यूज ने भी उनको एक बार आउट करा है, और अमिला केयर ने उनको शी केप्ट हर क्वाइट. और Hmm. हरमनप्रीत कौर को आई थिंक एक बॉल में एक बार विकेट भी लिया है हरमनप्रीत कौर ने. तो ऑफ कोर्स कौर से मैं ओपनिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट नताली स्कीवर और हिली मैथ्यूज दोनों उन्हें ट्रबल कर सकते हैं. बट Hmm. यू नो हाउ गुड हिल इज. तो अगर आप चेस कर रहे हैं यूपी और आपको लगता है कि चेज में मौका कम बनेगा, तो फिर आप उन पर वैसा रिस्क लेके जा सकते हो. तो इस गेम में on every big player you'll have a matchup that you can support. So eventually please back your visualization. पर हाँ, जो मेन टीम है उसमें रिस्क मत लो, बाकी की टीम में बिल्कुल पेट भर के रिस्क लेना. जो वीरेंद्र सर वैसे नहीं करते, पर अगेन यू हैव टू बैक योर विजुअलाइजेशन. Yes, absolutely. Each to their own. So let's start यस. making the team for this game. First up, keeping section में we are going with Alisa Healy, obviously the best choice. Yastika Bhatia has had one or two decent knocks, but nothing extraordinary yet. So not picking her for now.
In the batting, we are going with Harmanpreet Kaur and Grace Harris. Keep in mind, Grace Harris bowled her full quota of 4 overs in the last game, which makes it difficult for you to leave her, especially because none of the other UP batsmen have been convincing in terms of consistency, and hence it makes it a safe choice for us to go with Grace. And then you have the all-rounders, where the question will not be who you want to take, the question will be who you want to leave, because Devika Vedya also opened the batting in the last game. So Nikhil bhai, in what scenario would you pick Devika Vedya? Because I don't see us leaving any of the other all-rounders, even though Talia Migra didn't bowl in the last game. देखो काफी रिस्की है इन पांचों में से किसी को भी छोड़ना. अगेन द Hmm. प्रॉब्लम हियर इज, देखो अगर आपको लॉजिक वाइज जाना है तो आप कहेंगे कि दीप्ति शर्मा मे बी वाइल बोलिंग सेकेंड आप उन्हें ड्रॉप कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो ड्रॉप करने का, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में डेन में जाएंगी, शायद मैच कितना जाएगा आपको पता नहीं. तो Hmm. आपको दीप्ति के लिए एक केस मिल गया. ताहिला मेगरा इंटरेस्टिंगली हैज वेरी ग्रेट मैचअप्स दैट यू विल नॉट वांट टू पिक हर. अगेंस्ट अमिला केयर 30 बॉल्स में 3 बार आउट चुके हैं तो अमिला केयर. नटालिया स्कीवर को 13 बॉल में 1 बार आउट हो चुके हैं. पूजा वस्त्रकर को 15 बॉल में 1 बार आउट हो चुके हैं. और आई थिंक हेली मैथ्यूज ने उन्होंने आउट नहीं किया, बट रन्स हैव बीन क्वाइट. तो अगर वो स्कीवर को खेल जाती हैं और केयर को खेल जाती हैं तो आपको लगता है कि शी कुड डू वेल, बट पिछले गेम उन्होंने बॉलिंग नहीं करी थी. तो आपको विजुअलाइजेशन ये देखना है कि क्या आप तहला मेगरा को बॉलिंग करते देख रहे हो. अगर आप देख रहे हो तो आप उन्हें बिल्कुल लेना, क्योंकि शायद सिर्फ बैटिंग पे लेना थोड़ा ट्रिकी हो जाए. तो वो आप कॉल इन दोनों पे ले सकते हो. अमिला केयर, नटालिया स्कीवर, हेली मैथ्यूज को मुझे नहीं लगता आप किसी भी सिनेरियो में ड्रॉप करोगे. मतलब डेटा तो आपको नहीं बोल रहा कि ऐसा कुछ है जहाँ पे आपको उन्हें ड्रॉप करना चाहिए. तो प्लीज वो आप मेरे हिसाब से वैसे आप कॉल ले सकते हो. अमिला केयर की यूसेज अगर आप देखें तो काफी कम रही है, बट Hmm. जिस दिन अमिला केयर विकेट लेंगी ना सीधा 4-5 लेंगी. तो एक ग्रैंड लीग पिक अभी से बोल देता हूँ. अभी देखो वुमेन्स गेम में ग्रैंड लीग पिक ज्यादा होती नहीं है. आपको सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन पे ना जाना ही ग्रैंड लीग चॉइस हो जाता है. तो आई थिंक अमिला केयर कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन इन दैट सेंस. Yes, so I think the players from this section where the risk is worthy, like Nikhil Bhai mentioned, Sahilya and Dipti Sharma to a point if she's bowling second. And I'll throw the cat out of the bag here in this section. UP has a lot of right-handers, so don't be surprised if that risk for me is Hayley Matthews in this game. Then we look at the bowling section. Here I'm going with Sophie Eccleston, Saika Ishak, and Izzy Wong. So no doubts in this section really. The only picks that you look at are probably Gaikwad and Anjali Sarwani, because Pooja Vastrakar is playing around so many quality bowlers that she's not getting her quota. Yeah. But I think Anjali Sarwani when bowling first, Gaikwad when bowling second can be good choices for you to try. बिल्कुल. अगर आपको और थोड़े नंबर से कंफ्यूज अगर होना है तो मैं कहूंगा यू कैन टेक अ रिस्क ऑन स्कीवर ब्रंट एज वेल, बिकॉज उनको तैला मेगरा ने 11 बॉल में 2 बार आउट किया है. But she'll bowl, right? In this game, she should bowl a सो decent आइडियली amount again. आइडियली बॉलिंग करनी चाहिए, बट Hmm. आइडियली ये वर्ड 2023 के लिए काम नहीं कर रहा है. तो Hmm. नहीं वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते हम वो चीजें. आप देखो दूसरा एक टूर्नामेंट हाईवे पे चल रहा है तो 250 260 की गेम्स हो रहे हैं. तो अगेन The जैसे मैंने 250. कहा इस गेम में आपके पास हर ऑलराउंडर के लिए एक सिनेरियो है जहाँ पे आप उन्हें पॉसिबली रिस्क लेके ड्रॉप कर सकते हो. तो आई थिंक दिस इज अ Hmm. वेरी गुड गेम टू ट्राई फॉर जीएल, क्योंकि मेजॉरिटिवली सबकी बेस टीम सेम रहेगी. आपका Hmm. कैप्टन वाइस कैप्टन ही डिसाइड करेगा कि आप क्या पोजीशन पे फिनिश कर रहे हो इन मिनी जेल्स. तो अभी के लिए जो कैप्टन वाइस कैप्टन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, दे आर द सेफेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस जिनको आप दोनों ही सिनेरियो में अपनी टीम में रखोगे. सो दैट इज हेली Hmm. मैथ्यूज एंड सोफिया क्रिस्टियन. अगेन सोफिया क्रिस्टियन के नंबर्स बहुत बढ़िया हैं इन टर्म्स ऑफ मैचअप्स विद दीस साइड्स, एंड अगेन लॉट ऑफ राइटीज इन मुंबई. तो सोफी डालेंगे भी इंपॉर्टेंट टाइम्स में. और हेली के साथ देखो रिस्क वही है, वो एंड में आती हैं 3 विकेट लेके जाएंगी, बैटिंग करके 20-25 भी दे दिया. तो द प्रॉब्लम इज वो इतनी ज्यादा कॉमन ऑप्शन है कि आपको कवर करने के लिए यू नीड अ स्पेशल परफॉर्मेंस. तो ये सारी चीजें आपको बैलेंस करके चलनी पड़ती हैं कि आप ये सोचें कि एक दिन आपका परफेक्ट कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकता है, बट सेकंड डे वो शायद ना हो. Hmm. तो इसके लिए मल्टीपल टीम्स मल्टीपल कॉम्बिनेशंस खेलिए ताकि यू आर एबल टू क्रैक दैट वन कॉम्बिनेशन वेरी वेल. Yes, absolutely fair enough. And my matchup for the day to watch out for, not the matchup I want to watch out for, but sadly the matchup we all have to watch out for. Sophie Eccleston versus Harmanpreet Kaur. Again, a much spoken about matchup and multiple dismissals. So
that's another risk that you can probably try, because it has been proven across conditions and across match segments. So let's see how that goes. Now let's look at the Grand League options for this game, because I guess this is one of those games where you'll have quite a few options that are still out on the bench. Yeah. Go for it, sir. नहीं सर, पहले आप. So I think there are multiple choices in this game. Obviously, in the keeping section, there's Yastika. I just want to show a graphic here so we can figure out who are the picks we can pick and in what scenario, because there are multiple players that we have left on the bench. So, like we do in the solo previews, I'll just show you the 5-6 players on my mind and how we can pick them. This will also probably cover Nickelby's picks, but just the idea being just to show that who are the picks and what scenario. So probably Yastika Bhatia when she's batting first, because then she's able to take her time, and that is what has helped her score runs. Devika Vedya, if batting first and bowling second, obviously she's not been back that much with the ball yet, but I think that should come sooner rather than later. And the other two picks I spoke about, Anjali while bowling first and Rajeshwari while bowling second. Nikhil bhai, how do you see it going? नहीं बिल्कुल, काफ़ी फेयर पिक्स हैं. अगेन कंडीशनल है, वो याद रखना. तो ऐसा नहीं है कि आप उनको हर सिचुएशन में, कॉम्बिनेशन आपका कैसा होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक्स है. टू मी आई थिंक, जैसे मैंने पहले कहा, अमिला केयर बिकम्स अ वेरी 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 गुड ऑप्शन टू ट्राई आउट फ्रॉम मुंबई. और अगर मुझे यूपी से किसी को ट्राई करना है, तो अगर देविका वैद्य वापस बॉलिंग करती हैं इनफ कंसिस्टेंटली, तो आई थिंक देविका विद्या कुड मेक फॉर अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. तो एक कॉम्बिनेशन में देविका विद्या एंड सोफिया क्लेस्टन का कॉम्बिनेशन आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो. और यहाँ पे आपको और अगर ऑप्शन चाहिए, तो देर आर पीपल, देर आर प्लेयर्स लाइक अमनजोत कौर जिन्हें यूज भी नहीं किया अब तक बॉम्बे ने. तो मे बी दीज आर द गेम्स जहाँ पे उन्हें वो मौका दिया जाए एंड शी कम्स गुड. तो इट कुड बी अ ग्रेट डिफरेंशियल. बट अगेन दीज आर ग्रैंड लीग ऑप्शंस, नॉट फॉर योर स्मॉल लीग. स्मॉल लीग में मोस्टली आप हेली, सोफी और अंटाली के साथ ही जाएंगे. ग्रैंड लीग में please try Devika Vedya, Amelia Kerr, and of course Harmanpreet Kaur as well. तो ये आपके पास काफी Yes. सारे ऑप्शंस है. ग्रेस हैरिस भी हैं. अब देखिए ग्रेस हैरिस की बॉलिंग कितनी आती है मैं पता नहीं. और तालिया मेगरा की तब तो हमने बात ही नहीं की वैसे ऑप्शन में. बट अगेन दैट इज द थिंग विद द ईयर, आपको आपके विजुअलाइजेशन को बैक करना है. काफी सारे ऑलराउंडर्स है. एवरीवन इज गुड इनफ टू बी अ कैप्टन एज कैप्टन. Yes, absolutely. And now that we're doing this on live, happy to take some questions, Yes. and also happy to hear from you now that we have so many options. Who are the options that you are thinking about? So let's start with the questions. Okay. Sir, this is not the case. This is only the case because you are probably on the channel since 2-3 days. सबका struggle उतना ही है. So देखो यही, बट एक्चुअली दिस इज व्हाट इज वर्थ प्लेइंग द मिनी जेल्स फॉर. क्योंकि जब आपका कॉम्बिनेशन सही बैठता है, आपको 10x 8x रिटर्न आना चाहिए. दैट इज वाई यू प्ले द काउंट द टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट दैट यू डू. तो उसमें बेनिफिट ये है कि अगर 3 गेम नहीं भी चले, पर अगर चौथे गेम में चल गया, तो आपको 6-7 गेम की इन्वेस्टमेंट वापस आनी चाहिए. सो दैट इज द काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी दैट यू काइंड ऑफ मेक फॉर योर सेल्फ. और परफेक्ट कैप्टन वाइस कैप्टन सर, वो तो देखो हाइंडसाइट में होता है कि होने के बाद वो परफेक्ट लगता है. होने के पहले आप क्या सोच रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है. तो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस में मल्टीपल सिनेरियोज इमेजिन करके बनाइए. होपफुली कोई एक परफेक्ट निकल जाए. yes, absolutely. In fact, there was some a popular name who was asking me when we posted the team with Eccleston and Dipti while bowling first as captain, vice captain, and the question was why did I not go with Heather Knight? So you have to think of it a little objectively. We saw that most of Heather Knight's wickets came while bowling first, and in that kind of scenario where there was pressure on the opponent to hit her more than her bowling quality being able to take those wickets. Not saying that she's a bad bowler or anything by any means, but in comparison, Dipti is a specialist in that situation. So करेक्ट. try to think about the game little more objectively. वो आपको help करेगा. बिल्कुल. Eccleston captain and Grace Harris vice captain for GL. Yes, very fair call, especially if they're bowling first. Then why not? The only thing that will work against Grace Harris, I guess, in this game is I think both teams have a lot of right-handers. Maybe Grace Yeah. will actually bowl in the power play because that's where the left-hander is sitting. So Yeah. yes, possible a wicket and 20 odd runs, and I think her batting will come against such kind of an opponent. So बिल्कुल.
तो ये भी देखें जो एक वन वन वे टू गुड वे टू थिंक अबाउट ग्रैंड लीग इज मुंबई की टीम का मिडल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ है Hmm. एंड यूपी लूज अ लॉट ऑफ विकेट्स। तो आप ऐसा भी एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो जहाँ पे दोनों टीम्स के विकेट जा रहे हैं एंड द की प्लेयर्स फॉर बोथ साइड्स आर द वंस दैट आर डूइंग वेल। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास ट्राई करने के लिए, बट आपका विजुअलाइजेशन कॉम्बिनेशन वैसा हो बस कि वो एक क्रैक कर जाए तो यू शुड गेट डिसेंट रिटर्न्स। Yes, absolutely. Talia McGrath is first bowling first captain, vice captain. Not for me actually because she didn't bowl in the last game, so I would not really try that. Nikhil bhai. नहीं, मैं किसी टीम में तो डेफिनेटली ट्राई करूंगा उन्हें, नो Hmm. नो डाउट अबाउट दैट शी कैन डू व्हाट मारेजान के अपडेट यस्टरडे एज वेल। तो प्रॉब्लम बस इसमें जैसे मैंने कहा एक ही है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, कोई भी कभी भी आके 3-4 गुच्छे में विकेट्स लेके जाएगा तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए वो ऑलराउंडर पे रिस्क लेना आपको टीम में तो रखना चाहिए ताकि आप वापस आ सको गेम में। और किसी एक टीम में डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन कॉम्बिनेशन। यू कैन मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोफी तालिया, यू कैन मेक दीप्ति तालिया एज अ कॉम्बिनेशन while bowling first. So there are enough options for you to try out in that sense. Yes, absolutely. And remember to join the free entry contest. It's now Yeah, open on Fan to Play. App link is in the description. Leaderboard contest is also open. You can join with yeah, 10% bonus cash. And if you're a new user, you get 200% bonus on your first yes, deposit, especially if you sign up right now. So yeah, go sign up right now and you'll get that benefit too. yeah. Do you guys stock ranking and fantasy point of your team during live matches? Actually, this is a habit I've been able to get off slightly in the last few weeks, especially after the break. I've had some disconnect, but now as I get closer to IPL, that refresh button will keep getting hit. नहीं, मेरे लिए काफ़ी सिंपल हो जाता है और आई थिंक अ लॉट ऑफ अस विल रिलेट टू इट एज़ वेल। जब आप उसको ज़्यादा एम्फेसिस देख के नहीं देखते हो, यू डू बेटर बिकॉज़ Hmm. देन आप पूरा टाइम उसके बारे में नहीं सोच रहे हो। तो मैं ये बोलना कि मैं नहीं देखता हूँ विल बी अ लाई। तो यू डू चेक इट, बट अब आप गेम देख रहे हो, आपके आपके कॉम्बिनेशंस पता है। तो मैं टेंड टू वॉच इट ओनली व्हेन आई नो आई विल बी डूइंग वेल। अगर नहीं ठीक कर रहा तो आपको पता है, देख के कुछ मतलब नहीं है। पीएसएल तो मैं चेक ही नहीं करता हूँ क्योंकि उधर चेक करके Hmm. कुछ मतलब ही नहीं है। उधर तो एक ओवर में आप 1 से 100 और 100 से 1 पे जा सकते हो। तो वो उतना बीपी बढ़ा के अपना मतलब नहीं है। पर हाँ, टेस्ट मैच भी एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे मैं चेक बिल्कुल नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम। तो अगर आप मैं कहूँगा अगर आपको ट्राई करना है तो पीरियोडिक टाइम पे करो और ट्राई करता हूँ मैं कि अंत में देखूँ क्योंकि आपको फिर पता है कि ज़्यादा चेंज नहीं होगी पोजीशन। पर अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन चल गया है तो मेरे लिए बेस्ट होता है, फिर मैं चेक नहीं करता हूँ। फिर सीधा मैच के बाद जब मेल आ जाता है कि दिस इज व्हाट इज इट इज देन यस गुड गेम। Yes, fair enough. And can we get some tips for England versus Bangladesh? So Bangladesh won the first game, and the games are happening in Bangladesh. So don't be surprised if some worse ranked turner like that Bangladesh New Zealand game comes out here for them या to seal the series. And personally, I'm not really focusing too much on that series because या one side is PSL where we are seeing 40-meter boundaries, मतलब या 40 है मेरे हिसाब से देख के तो यही लग रहा है वो 50 बोल रहे हैं टीवी पर एंड पिच में भी कुछ नहीं है एंड अदर साइड इज दिस काइंड ऑफ सीरीज वेयर they'll randomly produce any kind of pitch on every या game, so just important to select the kind of games that you're playing, and I'll not unnecessarily give out any advice if I've not researched on the game. Nikhil bhai, any inputs from you? देखिए जैसे पिछला मैच था इट इट फेल्ट लाइक एन एनोमली क्योंकि इंग्लैंड आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट Hmm. पूरा गेम मेरे हिसाब से कंडीशंस के ऊपर है। चेजिंग बेटर रही है वेन्यू पे, पर अगर आपको लगता है कि स्पिन को हेल्प मिलेगी तो अगेन यहाँ पे भी देखो ऑप्शंस आर वेरी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ कैप्टन वाइस कैप्टन फॉर सेफेस्ट ऑप्शंस। शकीब, मोइन अली, सैम करन, दे विल ऑलवेज रिमेन योर प्राइमरी ऑप्शंस। अगर आपको ग्रैंड लीग में लोगों को ट्राई करना है तो यू कैन ऑलवेज ट्राई जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद। बांग्लादेश से 2 नाम चाहिए तो आफिफ हुसैन एंड लिटन दास। तो शायद जो मेरे सजेशंस हो पोस्ट टॉस दे माइट बी वेरी सिमिलर। पर अगेन सिर्फ ग्रैंड लीग खेलना, वो जो पिचेस हैं, आई थिंक पिच इस साल दे हैव ऑल टेकन रवि शास्त्री वेरी सीरियसली। टेक द पिच आउट ऑफ द इक्वेशन। उन्होंने पिच कुछ भी हो जाता है पिच पे तो लाइट फ्रॉम दिस ऐसे 20 डेज हमें नहीं पता पिच पे क्या होने वाला है। तो
उसके हिसाब से अपने विजुअलाइजेशन को बैक करना। Yep, and only one input here, the game is happening in Dhaka, and Chattogram is known for little better batting बट conditions. हाँ, If I'm not wrong, it's that's where Kishan hit that या mega knock, yeah? Yeah. या So Dhaka should be slightly slower than what we saw in the first game, होपफुली, ideally. होपफुली तो स्पिन टू विन। ये बोलने के बाद सब पेसर विकेट लेंगे देखो। Just wait, just wait. या New can we Haley को ड्रॉप करना कितना हाईएस्ट राइट रहेगा सिलेक्शन सर? इफ आप जीएल खेल रहे हो तो आप कर सकते हो, या but otherwise obviously tricky in small leagues. In small leagues you want to take that kind of risk where you know ki the player, if they come into the game, they'll not give 100 points and totally knock you out. You want to take या risks on those kind of players, so you think 20-30 points, maybe 20-30 runs, which you can be covered by another player, which can be Harmanpreet Kaur today with the kind of matchups that she has while batting second. So maybe या that is the kind of risk that you want to take, and then maybe slot an extra all rounder, extra bowler in that slot. बिल्कुल। और आई थिंक एक और क्वेश्चन है जहाँ पे आप गुलशन सर पूछ रहे हैं कि हाईएस्ट सिलेक्शन प्लेयर नेम जो हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो देखिए हमने मैचअप आपको सभी के बताए हैं। ऑलमोस्ट एवरी ऑलराउंडर के लिए आपको आपको एक कंडीशन दी है कि जहाँ पे आप उन्हें ड्रॉप कर सकते हो। तो आप मे बी यू कैन गो बैक अ बिट इन द वीडियो एंड चेक, एंड अगर आपको लगता है कि वो विजुअलाइजेशन उभर के आएगा, वैसे गेम जाएगी, तो फिर आप उन्हें ड्रॉप कर सकते हो। पर याद रखना, वुमेन्स गेम में इवेंचुअली द कोर प्लेयर्स रिमेन द सेम। आप Hmm. उन्हें ड्रॉप कर दो फॉर वन सेक्शन, दे कुड कम अप एंड टेक 4 विकेट्स विद द बॉल और हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो वो रिस्क हमेशा रहता है। तो अनलेस यू आर 100% श्योर कि नहीं ये मैचअप ऐसा ही जाएगा, तो फिर यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड ट्राई मल्टीपल ऑप्शंस इन ग्रैंड लीग्स। पर वही है कि देखो ऑलराउंडर हैं, सब क्वालिटी है, तो दे आर सो गुड कि वो डक पे भी आउट हो जाए ना तो भी 100 पॉइंट देके जाएंगे विद द बॉल। तो फिर वो रिस्क अगर आपको लगता है कि वर्थ है तो प्लीज टेक इट। Yes, absolutely. We'll take last 2-3 questions, या and जो भी नया है, I can see a few people coming in. Like button दबाओ जल्दी so that more यस people can come in and we can take few more questions. Deposit leaderboard contest for SCB family. It will come by tomorrow, sir. So थोड़ा weekend है, so अब तक आया नहीं है ranking. But as soon as it comes, I'll share it with you guys. यस एंड Uh, there is a very good comment that I want to highlight. some Yeah, players play on best innings in 10 like Jason Roy, Guptill. Yeah, like personally तो I drop them 10 out yeah, of 10 times, क्योंकि ठीक है ना भाई, 3 बार उसने आपको हरा दिया, 7 बार आपको जिता दिया, तो आप exactly. तो मिनी जेली खेल रहे हो. So yeah, it's that kind of risk that you can take. So I do the same thing. Like actually, I'm going to make one video where I have such kind of players that I categorize who I always drop: Mohammad Harris, Jason Cameron Roy, Green, Martin Guptill, Cameron Green. Michael Bracewell. Mike, no, that guy shifted into another list. So he's अच्छा now अच्छा, my captain, vice captain, permanency. बिल्कुल। एक दिन वो कॉन्वर्सेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या मस्त मस्त होगा कि 5 प्लेयर्स जिन्होंने आपको बहुत हराया एंड 5 प्लेयर्स जिन्होंने आपको बहुत जिताया। And category shift हो गए. यस, करेक्ट करेक्ट। यस, आई थिंक नीरज आई थिंक हैज अ ग्रेट क्वेश्चन दैट वी कैन राउंड अप ऑन, एंड देन Hmm. What's the द क्वेश्चन। difference in terms of price range? So by price range you mean the price that you get or the entry fee? Little confused. हाँ, तो प्लीज सर आप वो एक बार क्लियर करना। और देखिए द टाइप लीग्स दैट वांट टू जॉइन आई फील मेक्स द डिफरेंस। मेरे लिए एसएल यूजुअली सिंगल विनर होता है। अगर मल्टी विनर खेल रहे हैं तो फिर आई थिंक इट इज एज गुड एज अ छोटा काइंड ऑफ मिनी जेल। द नंबर इज बेटर वंस यू गो इन टर्म्स ऑफ 11 मेंबर्स प्लस। आई थिंक एंट्री फी वो पूछ रहे हैं, so Hmm. difference in terms of price range. So different apps will have different kind of entry fees for that. मेरे हिसाब से फैंटम पे भी आप खेल रहे हो तो सुपर हिट कॉन्टेस्ट आर द बेस्ट काइंड ऑफ मिनी जेल्स टू प्ले। Hmm. 11 मेंबर्स 30 रुपीज एंट्री फी, टॉपर गेट्स 150 ऑड। तो वो काफी अच्छा आपके लिए रिवॉर्ड है फॉर द रिस्क दैट यू हैव टेकन। एंड उसमें हायर एंट्री फी जो होती है, कभी कभी 999 वाली लीग होती है, कभी 1390 वाली लीग होती है, तो उन पे आपको देखना है कि टॉपर गेट्स 10K प्लस। तो वो फिर आपके रिस्क के लेवल के हिसाब से होता है कि अगर आप वैसी टीम लगा रहे हो तो फिर वैसे कॉन्टेस्ट खेलने में इज ऑलवेज हैंडी बिकॉज योर रिस्क हैज टू बी रिवॉर्डेड। तो आपको वो देखना चाहिए। स्मॉल लीग में आपका ओपोनेंट मैटर करता है क्योंकि आप किसको लेके जा रहे हो, कॉमन है कि नहीं है।
पर मिनी जेल में आपका ओपोनेंट मैटर नहीं करता, इवेंचुअली इट इज योर विजुअलाइजेशन थ्रू एंड थ्रू। तो गंदा भी होगा तो भी अगर यू विल बी एबल टू गेट समथिंग बैक, जो शायद एसएल में हर बार नहीं होता। Yes, fair enough. And yes, my first pick always will be Hasaranga for captain and vice captain, बिल्कुल। especially when bowling second. या And I guess that wraps up all the questions that we have for now. In case you have any questions, you can still put them in. We have another last 1 or 2 minutes. Also, for all या of you that are here, and irrespective of whichever channel you're watching this on, यस many of you tell us that you don't end up getting notifications of the video or you end up missing the video. So when you या subscribe, there's also an option to hit the bell icon so you get all the आइकन। notifications. So hit that bell icon and click on all, so you'll get all the notifications, and then you won't have to take the trouble of finding the link every time. यस And yes, I होपफुली guess that's about it. yeah, and Huh. hopefully we'll be more regular now. But again, such have been the times we've both been traveling a lot. So hopefully videos ज़्यादा regularly आ जाएंगे अब से. So let's hope we keep trying. I can't make that promise for some time more, but yes, hopefully. Anyway, thank you so much to everyone who tuned in. And yes, sir, we have one more this thing on mini GLs and fan to play. So fan to play people who are watching this, we also want this. They also want Yes. this. So it's going to come very soon. So this feedback has already been passed a few days Yeah. ago. So should come up soon. And what's working currently in WPL? Is it the pitch or the matchups? For me personally, it's gut feel, Nikhil bhai. Yeah. See, I think pitch eventually मेरा कॉल होता है ऑन द पिच एंड देन द मैचअप. तो अगर पिच Hmm. स्पिन फ्रेंडली है तो मैं स्पिन फ्रेंडली मैचअप के फेवर में टीम बनाता हूँ, और नहीं होता तो नहीं बनाता. सो अभी के लिए WPL हैज बीन ईदर 10x रिटर्न और 1x और नो रिटर्न, विच इज आई थिंक Hmm. फाइन फॉर मी, क्योंकि अब तक के लिए मेरा 5x और 10x रिटर्न ज्यादा रहा है इन द नंबर ऑफ गेम्स सो फार. बट होपफुली जैसे हमने कहा स्ट्रॉन्गर टीम्स खेलेंगी तो डिफरेंस कम हो जाएगा. और पहला सीजन है तो every team is still trying to cope up with the best combination. You can ask RCB more for that. Yes, absolutely. So we'll wrap up this one. Yeah, Thank you so much to everyone who tuned in. Jaldi milenge for one more preview, and hopefully. see you all soon. Keep staying tuned to us. Keep hitting Yeah, that bell icon and keep smashing the yes. like button so you keep getting reminders for more such videos. See you all soon. Please, आप हैं तो हम हैं. Thank you.